What's up, guys? Welcome to another training at FBA. Today, we'll be talking about accelerating your fitness business as always. Today's framework is very important, especially for those who have been posting on social media but are not getting any clients. So basically, अगर आप complete beginner हो जिसने अभी तक अपना fitness business start नहीं किया है, तो ये आपके लिए इतनी value नहीं provide करेगा, but future value आपके लिए provide करेगा. And this is mainly for two kinds of people. Number one, coaches who haven't been able to crack it as of now, that you haven't gotten your first few clients from social media yet. And the second category is those who were getting clients in the past, but अब clients नहीं आ रहे. 2020 21 तक आ रहे थे, 22 तक भी आ रहे थे, उसके बाद 23 में बिजनेस नीचे जाना स्टार्ट हो गया एंड हैज गॉन डाउन फर्दर. राइट, वो अंडरस्टैंड करते हैं ये क्यों हो रहा है एंड हाउ डू यू बिकम अ सोशल मीडिया client magnet. That means whatever content you create either nurtures your prospects or gets you leads, right? So let's understand the reasons your fitness content doesn't convert on social media. And this is based off my experience of working with over 300 plus fitness coaches, 350 plus ho gaye honge ab, and helping them solve this problem literally almost every day, right? So basically, let's understand why your content is not converting, why aren't you getting coaching clients, and why aren't people getting interested in your service, right? And a framework to fix it. Obviously, once we point out the problems, we'll be fixing them. Here are a few case studies where we fixed the content and we changed the game, right? We fixed the content and messaging based off everything I have discussed. Uh, I'll be discussing in this framework and I have discussed in the past. And let's go. प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं कि कंटेंट पोस्ट करने से होता क्या है. Posting content is a way through which we as coaches show our knowledge and expertise to directly or even indirectly signal that we are the best possible solution to our prospect's problem. Guys, अब understand करो, why would someone want to take your service? Why would someone want to take your coaching? The only scenario where they would want to take your coaching would be this, that they start believing that you are the best possible solution to their problem, their health problem, or their transformation problem, right? When you post content day in and day out, they keep on liking you more, trusting you more, and they come to the conclusion that, wow, this person is amazing. I want to get coached by this person, right? So keep in mind कि आप online as an online business owner अगर आप post कर रहे हो content, सिर्फ एक काम है आपके content का. Only one job, that is nurturing your prospects. जो लोग थोड़े से भी interested है आप in what you do, उनको उनके इंटरेस्ट को डीपन करना है and getting them to a conclusion that you are the best possible solution to their problem, so that they pay you money, so that they become your clients, and so that you can change their life by coaching them, right? That is deepening the interest of your prospect. जितना डीप होगा इंटरेस्ट उतना ज्यादा उनको जब फिटनेस या ट्रांसफॉर्मेशन की याद आएगी, आपकी याद आएगी, राइट? एंड जब इंटरेस्ट डीपन होता क्या होता है, द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज दैट पीपल इवेंचुअली स्टार्ट मैसेजिंग यू and they start responding to your call to actions when you post a transformation, or when you invite people to join your service, and when you post offers on your social media. That's when people start messaging you. It's as simple as that, so that you can get them on in a conversation where you would convert them via DMs or via calls, and there's no other purpose. Please isko yaad rakho, आपके कंटेंट का काम सिर्फ एक ही है, दैट इज deepening interest of your prospects in you and your services. Not just your services, you, because people invest in people, not just in services. No other purpose, right? ये चीज आपको जिस दिन आपको समझ आ गई है, that is the day your content creation would change, because it just has only one focus, no other focuses, right? So number one reason your content does not convert, assuming that you have been posting content and you're regular, it's random, right? 90% of coaches are creating content because other coaches are doing it, right? 90% लोगों को ये नहीं पता, ये प्रिंसिपल नहीं पता कि भाई, इफ इफ आई पोस्ट कंटेंट दिस वुड नर्चर माय प्रोस्पेक्ट्स. रैंडमली चल रहा है सब कुछ. 90% कोचेस के लिए क्या हो रहा है, कंटेंट चल रहा है एकदम रैंडम, राइट? वो सिर्फ दो चीजें देख रहे हैं कि बाकी सक्सेसफुल कोचेस क्या कर रहे हैं. सेकंड, क्या कूल लगता है, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स रैंडम.
without understanding their situation, without understanding their knowledge, without understanding their brand, without understanding their niche and messaging. Because first thing which you need to understand is कि आप randomly काम करोगे तो you would miss out on your north star. आपका north star क्या है? Making money and getting clients. Random होगा तो some content pieces might work, others won't. Why? Because not every content piece is targeted towards a specific purpose, right? आई डोंट मीन टू से कि आप हर कंटेंट भी पोस्ट करोगे उससे क्लाइंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है. बट एक डायरेक्शन में पोस्ट करोगे तो 100% क्लाइंट्स आएंगे, राइट right? अगर आप दूसरों को कॉपी कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उनका ब्रांड क्या है, सिचुएशन क्या है, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी, राइट. एग्जांपल, आप ट्रेन बाय वाईवीएस की स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे, दैट वोंट वर्क. फिटनेस बिजनेस एक्सीलरेटर की स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे, दैट वोंट वर्क. एनीवे 90% ऑफ द इंडस्ट्री इज स्टिल डूइंग दैट. बट आर दे मेकिंग मनी? द आंसर इज नो, नेग्लिजिबल, राइट. बिकॉज रैंडम है. For example, what I'm creating right now is based off my brand, right? Based off my messaging, based off who I am, right? So ये आपने understand करना है. Every human is different and every coach has a different priority. अगर आप randomly काम करोगे तो random ही results आएंगे. कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे. Chances हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे because others are doing that. Saturation है. सारे coaches एक ही random काम कर रहे हैं तो random काम से result आएंगे कि नहीं आएंगे? The answer is no, right? सो बेसिकली अगर आप रैंडमली लोगों को कॉपी कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यार ट्रेन बाय वाईवीएस पे ये पोस्ट बनाया है इन्होंने, ये अच्छा कर गया, व्यूज एंड लाइक्स अच्छा है, जो वट एवर इट वॉज, चलो कॉपी कर देते हैं. बट यू डोंट अंडरस्टैंड वेयर इन द पार्ट ऑफ माई प्रोस्पेक्ट जर्नी माई प्रोस्पेक्ट्स आर. मेरे फॉलोअर्स किस जर्नी के किस पार्ट पे हैं, राइट. सो दैट मेक्स एवरीथिंग रैंडम, राइट. ऑल्सो एट दैट एक्चुअली एम्पलीफाइज मैसेजिंग ऑफ द पर्सन यू आर कॉपिंग. ये बड़ी हार्ड टू बिलीव चीज है, बट अगर आप मिस्टर एक्स को कॉपी कर रहे हो, आप मिस्टर एक्स के ब्रांड को बड़ा कर रहे हो, नो मैटर व्हाट. अब आप सोचोगे कि यार मेरे फॉलोअर्स तो मिस्टर एक्स को फॉलो नहीं करते, बट दिस स्टिल हैपेंस. यू आर एम्पलीफाइंग मैसेजिंग ऑफ द अदर पर्सन इफ that other person has gotten their messaging right. If that other person is building their brand in that direction, then you are 100% helping them, not yourself, right? That doesn't mean आप इंस्पिरेशन ना लो. You have to take inspiration, but you build your own brand and your own messaging. Messaging किस चीज पे बेस्ड होती है? Who you are, what you are against, what sophistication level your niche is at, right? इन सारी चीजों के बेसिस पे आपको अपनी मैसेजिंग पता लगती है, right? Again, your goal should not be looking like a cheap copy of others, because eventually people would understand and they would not want to become your clients, right? So understand करो, randomly चीजें हो रही हैं. If there's no strategy, if you don't know what this content piece would do, might do, if you're not understanding the principles, then it's an issue. Everything you do should be based off principles, not based off random stuff, not based off what YVS is doing or your favorite influencer, whosoever that is doing. राइट. नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यू आर क्रिएटिंग फॉर लाइक्स एंड व्यूज. अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, आज तक मैं 2000 प्लस पोस्ट बना चुका हूँ. जिन कंटेंट पीसेस के व्यूज एंड लाइक्स सबसे कम होते हैं, वो सबसे ज्यादा मनी मेकर्स होते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर टारगेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ पीपल. You can't be a generalist. You can't make everyone happy. You can't connect with everyone and still make huge amount of sales. You can do that. At times it might work, but most cases it won't. मेरे केस में कई बार वर्क कर जाता है, but the thing is, I have been creating I've created 2000 posts. I have like 7,000, not 7,000, 5,000 plus notes in my own notes library, because I write every day. So over time मेरी messaging बहुत अच्छी होगी. Long term आपकी messaging अच्छी हो जाएगी. That would work, right? So keep in mind, you don't have to create for likes and views, because ये करोगे तो आपका business गया काम से. Genuine बोल रहा हूँ. लाइक्स एंड व्यूज आर कूल, ऑब्वियसली आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर लाइक्स एंड व्यूज को आप चेज कर रहे हो, दैट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल हेडेक. मेंटल हेडेक क्या होता है? यू वुड गेट इनटू डिप्रेशन इवेंचुअली. अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने बहुत कोचेस को देखा है हु आर स्टिल डूइंग दैट, सक्सेसफुल कोचेस. वो लाइक्स एंड व्यूज की टेंशन लेने लग गए. इंस्टाग्राम की रीच क्या हुई है? 99% कम हो गई है. अब आप लाइक्स एंड व्यूज की टेंशन लोगे तो योर मेंटल हेल्थ वुड स्टार्ट सफरिंग, because you are basing your success over a number which does not matter,
राइट? सो अभी आपने आज डिसाइड करना है आपने कोच बनना है हु इज मेकिंग मनी वाया कोचिंग, और यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, राइट? अब कंटेंट क्रिएटर और कोच में बहुत फर्क होता है. कोच क्रिएट्स टारगेटेड स्टफ फॉर देयर क्लाइंट्स व्हिच गेट्स देम इवेंचुअली गेट्स देम क्लाइंट्स हु पे देम अ लॉट ऑफ मनी. कंटेंट क्रिएटर क्रिएट्स फॉर लाइक्स एंड व्यूज. अब मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट क्रिएटर गलत है, बट कोच एंड कंटेंट क्रिएटर होना बनना बनने में आपको टाइम लगेगा. इवेंचुअली दिस वुड टेक टाइम बिकॉज यू नीड टू गेट बेटर एट दी स्किल्स, राइट? एक चीज अंडरस्टैंड करो, पीपल आर ऑन आईजी इंस्टाग्राम फॉर पासिंग देयर टाइम, नॉट लर्निंग. कभी आप ये उठ के नहीं सोचोगे यार आज मैंने न्यूट्रिशन के बारे में लर्न करना है या आज पतला होना है, मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूं. नहीं, राइट? So, because of that, IG does not push educational content. It's as simple as that. The content which would get you money and clients, IG does not push that. So that's an issue, right? Although as coaches we would want कि यार ये वाला हो तो मेरा हर prospect मेरा nurture हो इस चीज से, right? But educational content is not being pushed as much, especially the one which touches the heart of your prospects. पहले होता था 2020, 21, 22 this used to happen. 2023 onwards no, doesn't happen, right? So good coaches क्या करते हैं बेचारे? बेचारे because these are passionate people. They start chasing views thinking that the views would get them clients and start posting basic slash entertaining content. Entertaining content आप पोस्ट करोगे definitely views ज्यादा आएंगे, shares ज्यादा आएंगे. Would that get you clients? Unlikely. Once in a while, for example, 80% of the times you are following a strategy, 20% times you do random stuff. That's fine. That would, refresh your clients and prospects. Or, they would be like, wow, this person is entertaining. But अगर आप 80% times random कर रहे हो, this wouldn't work out because reach कितनी है आजकल Instagram की? बहुत कम, 1 to 2% है, right? Depending upon how well you create, but average दे रहा हूँ 1 to 2% रीच है. उसमें भी आप रैंडम स्टफ कर रहे हो, जस्ट चेजिंग एंटरटेनमेंट फॉर प्रोस्पेक्ट्स बिकॉज उससे लाइक्स एंड व्यूज आते हैं. दैट इज अ लिटिल पॉइंटनेस. व्यूज आर कूल बट वर्थलेस इफ दे डोंट कन्वर्ट इनटू क्लाइंट्स. यार अब देखो ड्रीम सिनेरियो है, व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ड्रीम सिनेरियो, राइट? बट अगर उससे क्लाइंट्स नहीं आ रहे देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा. I'm teaching you this thing, but it took me a while to understand this, right? As a business owner, your goal should be to ensure that each content piece nurtures your prospects and moves them along in their conversion journey and increase their interest rate, how interested they are, right? More interested they are, they become what? Client, right? हर नर्चर कंटेंट का क्या होना चाहिए? आज कम इंटरेस्ट है, थोड़ा ज्यादा है, अब थोड़ा ज्यादा है, ये देखो, वाह, राइट? सो अंडरस्टैंड दैट. Also, if you can create a balance between getting views and providing value and nurturing through the same, that's a game changer, right? अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा बंदा नहीं एग्जिस्ट करता होगा जो नर्चर भी कर रहा है, व्यूज भी आ रहे हैं, but I'm not one of those, right? It's as simple as that. So I like teaching. I only teach stuff which I myself do, else I don't teach it, right? Because if I don't believe in it, my clients won't, right? So if you are creating for likes and views, that's another issue. But likes and views आते हैं तो अच्छी बात है. But focus should be this. Interest level बढ़ाना अपनी सर्विस में, so that your prospect is like, wow, this is the best solution to my problem and I'm going to pay this person money, right? Next बहुत बड़ी problem है, you are creating for self. We as humans are narcissistic in nature. That means all of us are self-absorbed. आइडियल वर्ल्ड सिनारियो में मैं सारे कंटेंट पीस ऐसे बनाऊंगा जिसमें सारे मैसेज करें वाओ वाईवीएस, वाओ वाईवीएस, राइट? But I would like to create content which is like glorifying myself or acting like how great I am. हर कोई ये चाहता है as a human. I also want appreciation. If you comment or like here, I would get happy that okay, my work is providing value, because we are self-centered and we want to be feel valued. Issue क्या है इसका? Your consumers, people who are consuming your content are also like us. Humans हैं वो भी, self-absorbed है वो भी. So basically, on the longer time scale, they don't care about your content if they don't benefit from it. So first question हर बंदे का माइंड में क्या आता है? What's in it for me? आपने इस पे क्लिक करने से पहले, इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले सोचा होगा What's in it for me? टाइटल आपको अच्छा लगा, आपको लगा यार this would give me value, this would help me grow my business, this would help me get unstuck. Then you would definitely click on it. Else you would be like bye bye. I don't care YVS. Bye bye.
इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? अब ये कॉमन सेंस है, बट मोस्ट कोचेस आर क्रिएटिंग कंटेंट टू लुक लार्जर देन लाइफ एंड सेटिस्फाइंग देयर ओन ईगो। मैंने भी ये गलती करी है बीच बीच में। देखो, वंस इन अ वाइल आप अपनी लाइफ शेयर करो, बट यू हैव टू शेयर योर लाइफ टू क्रिएट रिलेटेबिलिटी। ये नहीं है अनरिलेटेबल लोगों को आप एक्टिंग कर रहे हो कि भाई आप तो सुपरस्टार हो सबसे बड़े। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे कोचेज होते हैं जो एक्ट करते हैं, ओ आई हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज डेज, आई हैवंट हैड अ ट्रीट मील सिंस 1 ईयर। बहुत कोचेज ऐसे पोस्ट करते हैं, मैंने चीट मील नहीं खाई एक 1 ईयर हो गया। वुड पीपल वांट टू बिकम योर क्लाइंट? वुड पीपल रिलेट टू यू? द आंसर इज नो। लोग भाग जाएंगे। बाय? बिकॉज दे वुड बी लाइक, यार ये खुद नहीं खाता तो ये मुझे थोड़ी ना खाने देगा ट्रीट मील। सो रिलेटेबिलिटी क्रिएट तब होती है व्हेन यू शो योर ह्यूमन साइड, यू शो योर मिस्टेक्स, लेसन्स, एंड वेयर यू goof up, right? So basically, keep in mind your content should be centered around giving value and helping your prospect and helping people in your niche. Again, you don't have to help everyone, you have to help people in your niche, right? रेड ओशन और ब्लू ओशन वाला कॉन्सेप्ट पता है आपको? सिंपल है। एक ओशन है जहां पे 100 शार्क्स हैं, दूसरा ओशन है जहां पे 5 शार्क्स हैं। और अगर आप शार्क हो तो आप कौन से ओशन में जाना चाहोगे टू गेट इनफ फूड? You would want to go into this. This is called blue ocean. This one is called red ocean because red ocean में क्या होता है, शार्क्स एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देती हैं। तो आपने अगर ब्लू ओशन में रहना है तो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू हैव अ नीश एंड स्पेसिफिक मैसेजिंग, राइट? नेक्स्ट, यू आर इनकंसिस्टेंट। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टिल 2021 क्या था कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बहुत चिल थे। आप कुछ भी पोस्ट करते थे, दो चीजें थी, एक तो आईजी का एल्गोरिदम, एल्गोरिदम पूरा सोच लेना दूसरा मार्केट। टिल 2021 एंड 22 क्या था कि आईजी का एल्गोरिदम बहुत ज्यादा फेवरेबल था। आपने पोस्ट किया, एवरेज पोस्ट है तो भी सबको दिख जाता था, दैट वाज गुड। दूसरा क्या था, मार्केट सोफिस्टिकेशन कम थी। दैट मीन्स there weren't thousands of coaches. There were some good coaches. So just being a good coach and being consistent worked. Now the market is sophisticated. There are a lot of good coaches out there, right? There are a lot of content creators out there. So there's a competition going for their attention. So ये imagine करो कि आपकी reach कम हो गई है and people only pay attention to those who touch their heart, right? So till 2021 क्या था? It worked. Inconsistency भी काम आ जाती थी because whenever you used to post, some people used to see it, right? Now in 2024, when I'm recording this, there are a lot of good coaches out there, and IG reach is down by 900%. अब good coaches के बारे में एक और भी चीज बता देता हूँ। Most of these good coaches don't know business, proper business and proper marketing इनको नहीं पता. So you still have that edge if you are watching this, right? So long story short, there's no room for being inconsistent. If you are, people would forget you. People would forget you. उससे क्या होगा? अगर लोग आपको भूल ही जाए, would they take up coaching from you? The answer is no. And people would want to take help from someone who shows up on their feed regularly, right? अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मार्केटिंग के बारे में। मोस्ट मार्केटिंग एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पे वर्क करती है जिसको कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट। एमई इफेक्ट लिख देते हैं। मियर एक्सपोजर इफेक्ट पे वर्क करती है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑल सॉर्ट्स ऑफ मार्केटिंग। जितना आपको ये, दिस इज लाइक साइकोलॉजी, जितना आपको ह्यूमंस रेपिटेडली देखते हैं उतना ज्यादा दे स्टार्ट लाइकिंग यू, राइट? सो इफ दे आर सीइंग सम एवरेज कोच who's showing up on their feed regularly, they would like and want to take help of that average coach more because of mere exposure effect. And this is how psychology works, right? So you need to show up regularly. Inconsistency is not working now, right? So how do we make sure that we are consistent? अब मैं ऐसे ये नहीं बोलता post daily and stuff like that, but I would ensure that you are posting stories every day. Stories आपने रोज पोस्ट करनी है no matter what, and content at least 3 to 4 times per week. Content reels, long form content, whatever you create, वो आपने 3 to 4 times per week create करना है no matter what,
राइट? एक और भी बात समझ लो, हार्वर्ड रूल ऑफ सेवन क्या होता है? एनी प्रोस्पेक्ट शुड गेट वैल्यू फ्रॉम यू 7 times before they convert, or they should consume content worth at least 7 hours from you before they would want to get converted, right? So you need to be consistent. Inconsistency is not working, at least when it comes to optimality. Other areas, ये basically ये था base of why your content is not working. And इसको भी understand करो, content क्या कर रहा है? Content is just generating interest in your service. The only thing your content is doing is generating interest in your service, right? इंटरेस्ट जनरेशन डज नॉट मीन क्लाइंट कन्वर्जन, बिकॉज वो एक जर्नी पे आपके क्लाइंट ने जाना है, जो मैंने आपको आई 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 वाली जर्नी बताई थी, राइट? जब बंदा क्लाइंट आपका इस लेवल में पहुंच जाता है, देन दे कॉन्टैक्ट यू एंड डीएम यू द वर्ड वॉट एवर योर वर्ड इज, माई वर्ड इज ट्रांसफॉर्म और स्केल, राइट? अब आपके आपको भी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने पहली हमारी यूट्यूब वीडियो देखी, पहला फ्रेमवर्क देखा, फिर आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने पुराने फ्रेमवर्क्स पढ़े, फिर आपने केस स्टडीज देखी, सारी रिलेटेबल केस स्टडीज देखी, तो यहां तक पहुंचते तक आपका इंटरेस्ट होगा, देन यू वुड मे बी click the link below in the description section and fill our form, or you'll DM us the word scale. तो आप भी एक जर्नी पे जा रहे हो अभी। आपको, इफ यू आर कंज्यूमिंग माई कंटेंट, यू आर गोइंग थ्रू अ जर्नी योरसेल्फ, right? And you are, by end of this journey, you'll come to a conclusion that YVS is the best solution to me growing my fitness business, right? shameless advertisement by the way, but बनता है, इतनी वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज लाइक बनता है। चलो, एनीवे, बैक टू दिस। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट वो एवरीथिंग नहीं है। ये भी एक कुछ लोगों ने गलती करते हैं। मैंने कुछ कोचेस का देखा, देयर कंटेंट इज एक्सेप्शनल, बट उसके बाद उनको कुछ नहीं पता, उसके पहले या उसके बाद उन्होंने बिजनेस का कुछ किया ही नहीं है। यू आर ग्रोइंग अ बिजनेस, राइट? यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। अब बिजनेस का क्या क्या पार्ट है, आई टेल यू। नंबर वन थिंग, यू नीड टू बिल्ड अ लेजेंडरी सर्विस फॉर योर नीश, राइट? दुनिया क्या कर रही है, उल्टा कर रही है। दे स्टार्ट विद मार्केटिंग, देन बिल्ड देयर प्रोडक्ट। इंस्टेड मैं क्या बिलीव करता हूं, बिल्ड एन अनडिनाइबल लेजेंडरी सर्विस विच गेट्स रिजल्ट्स एंड चेंजेस लाइफ, एंड देन मार्केट दैट। सो बेसिकली प्रोडक्ट टू मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग टू प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट से मार्केटिंग बनती है, एंड दैट इज व्हाट। नेक्स्ट इज undeniable knowledge. Undeniable knowledge होनी चाहिए. We ask our Team FBA members to go through ENU, Excel Nutrition Uni, which is exclusive for Team FBA right now, so that their knowledge is undeniable. Because मैंने बहुत सारे good coaches को देखा है जो who are certified multiple places, international certifications है, but postable client results नहीं होते उनके पास. If you don't have client results, there is an issue with your knowledge and service, right? You don't understand human nature or basics, whatever it is, right? Right? Most of the certifications in nationally, internationally don't teach you how to get great results for clients, and which is the biggest issue, right? So basically हम अपने हर टीम एफ बी मेंबर को गो थ्रू करवाते हैं ईएनयू से, एक्सेल न्यूट्रिशन यूनि, which comes with plug and play templates for nutrition training and everything else, so that they can just cater it to their clients and get results. Next thing which we do is, guys, knowledge and service are two different things. Knowledge is like good, सर्विस इज व्हाट चेंजेस द गेम, राइट? नॉलेज से क्या कर सकते हो आप, मैक्सिमम आप बना सकते हो प्लान। सर्विस से क्या होता है, प्लान फॉलो करने का आप सिस्टम बनाते हो, जिससे हर क्लाइंट जर्नी फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू प्लान डिलीवरी टू चेक इन्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए आपको सर्विस बिल्ड करने की जरूरत है। टीम FBA members को हम, this is something called better coach, where I've explained the exact process we use to coach at Trained by YVS, and we pull off shock the world transformations. By the way, if you don't know what Trained by YVS is, it's our parent company. We are still running it. We are not those business coaches जो basically whose main business is coaching, teaching business. My main business is growing Trained by YVS. Now the main business, another business is growing fitness businesses for fitness coaches and PTs. Right? ये understand करो. This market is full of those जो randomly, जिन्होंने कभी business नहीं run किया, सीधा वो कहते हैं हम business coach हैं, हम आपका business grow करेंगे. Right? These people can at best be called marketers, but again, I mean, there might be some coaches who are genuinely doing stuff like this. And by the way, guys, Trained by YVS हमने बंद नहीं कर दिया. We are still growing and scaling it so that we are able to support our clients with everything, because we are on a mission to change 1 million lives, and we can't change it without you guys, right? Next is
ये आपको, आपने सर्विस और नॉलेज बिल्ड कर ली, नाउ यू नीड डायरेक्शन। गाइस आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ब्लू वेल रेड वेल वाला, ब्लू ओशन रेड ओशन वाला, आपको मैंने डालना है ब्लू ओशन में, नॉट रेड ओशन में। सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नीश एंड अंडरस्टैंडिंग योर नीश इन डेप्थ, राइट। गैस एक और भी आपको चीज बता देता हूं, ये नीश जो है बिजी प्रोफेशनल्स, ये बन चुकी है जेनरिक। सो लॉन्ग टर्म आपने अपनी नीश चेंज करनी है, शॉर्ट टर्म इट इज फाइन। यू आर अ बिगनर, यू आर नॉट इवन एट, डोंट हैव योर फर्स्ट 5 10 15 20 क्लाइंट्स, दिस नीश इज फाइन। और अगर आप लॉन्ग टर्म इस नीश को कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको अपने कुछ समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं मार्केट सोफिस्टिकेशन, एंड उसके बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड द कोचिंग मेथड। कोचिंग मेथड ये हम एफबीए पे नहीं करते, ये हम एफबीई पे करते हैं, जो हमारा मास्टरमाइंड है टू टेक कोचेस टू द नेक्स्ट लेवल। बट अगर आप ऐसी नीश है जो बहुत लोगों ने रखी हुई है, देन आपको मार्केट सोफिस्टिकेशन के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, एवरीथिंग, राइट। मार्केट सोफिस्टिकेशन इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे, बट दैट इज व्हाट, राइट। ऑल्सो वेन यू आर बिगिनिंग, यू आर अ बिगिनर, आपको अभी तक आपने कभी नीश चूज नहीं करी है, एट द स्टेज आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपकी नीश क्या है, बट आपको एटलीस्ट कुछ डायरेक्शन चाहिए, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन आप एरोज मारोगे तो कुछ उसका कुछ फायदा नहीं होगा, फ्रेंडली फायर हो जाएगा, राइट। सो इसलिए आई, लॉन्ग टर्म आपने कोई बेटर नीश ढूंढनी है या मार्केट सोफिस्टिकेशन को सॉर्ट करना है, शॉर्ट टर्म दिस इज फाइन बिकॉज दिस इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। एटलीस्ट यू शुड हैव सम डायरेक्शन इन द बिगिनिंग, राइट। नीश कैसे चूज हो सकती है, लुक एट योर पास्ट। योर niche कैन बी यू हेल्पिंग अ पास्ट वर्जन ऑफ यू, माई niche इज दैट लिटरली। एफबीए में भी यही है, आई डिड नॉट हैव अ गुड person teaching me business, I learned all the business myself and by making mistakes and from my dad. So I'm solving that problem for you guys, right? Trained by IVS also, I tried losing fat for 18 years of my life, then literally, then I wasn't able to reach. So basically I did not have coaching, I became that coach, old version of me needed, right? राइट। सो नीश क्लैरिटी पे हम बहुत फोकस देते हैं, स्पेशली इन आवर मास्टरमाइंड एंड इवन एट एफबीए। बट अगेन वही है कि शॉर्ट टर्म दिस इज फाइन, लॉन्ग टर्म व्हेन यू वांट टू स्केल टू द नेक्स्ट लेवल, आपको या तो कोचिंग मेथड बिल्ड करना पड़ेगा मार्केट सोफिस्टिकेशन के हिसाब से, या आपको अपनी नीश को चेंज करना पड़ेगा। बोथ ऑप्शंस वर्क, बट बोथ हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन। नेक्स्ट इज यू नीड क्लियर मैसेजिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99.9% ऑफ कोचेस डो नॉट हैव गुड मैसेजिंग। सो बेसिकली मैसेजिंग कुछ नहीं है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट यू स्टैंड अगेंस्ट, who you are, who you are not, what you believe in, what you don't believe in, what your insights are, what insights others don't have based off your experiences, coaching and everything else. आपको क्लियर मैसेजिंग चाहिए, क्लियर मैसेजिंग नहीं होगी तो देन यू वुड बी लाइक, you would think that it's the industry is saturated, right? So ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो स्टेज टू स्टफ। स्टेज वन में आपको सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए, स्टेज टू स्पेशली व्हेन वी गेट यू टू स्टफ लाइक एफबी, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, right? And everything would be based off your market sophistication and coaching method, right? So basically and it should, everything should be linked, right? From your social media profile to your bio, to content pieces, to your DP, to how you talk, everything, all of these things in your brand have to be worked upon. And everything starts with what? Building a legendary service, right? This is where coaches are going wrong. उनको लगता है सिर्फ content is one part of it. Content is a part जो basically generate करता है interest, GI. बाकी सारी चीजें should be in sync plus your content. Everything should be in sync. That's why we are building a business here. हम कोई marketing वो नहीं है. And एक और भी आपको चीज बहुत clearly बता देता हूँ, अगर ये चीजें सारी sync में नहीं है, your marketing would not work because your marketing starts from what? Your service, your product. दुनिया क्या कर रही है, उल्टा स्टार्ट करती है मार्केटिंग से, ओके आज वाईवीएस की एड स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं एंड एक्सपेक्टिंग दिस टू वर्क। इफ दैट वुड हैव वर्कड, मेटा एड लाइब्रेरी खोल लो, मेरी स्क्रिप्ट कॉपी कर लो, जाओ कंटेंट कॉपी कर लो, दैट वुडंट वर्क, राइट? बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस, अ ब्रांड, राइट? बट इफ यू वांट टू एम्पलीफाई माय इमेज, you can do that, you can copy whatever. If you want to copy our principles, जो मैं आपको चीजें इस चैनल पे सिखा रहा हूँ, watch other videos and you'll learn so much business, then you'll be like shocked, wow, so much of value for free. Okay, so आपको मैंने बता दिया अभी तक इस स्टेज तक हमने क्या किया। नीश वगैरह चूज होगी, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल सॉर्ट होगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट कंटेंट using
One second. I think the color changed. One second. Now you need to create content using Team FBA principles. Sub principles क्या हैं guys? Principles are that we create a mixture of philosophy. What is your philosophy? What is your insight, value, connection, and social proof? Social proof क्या होता है? It is a proof that my service works before and after. Value is when you are solving problems for your clients via how to specifically for your niche. Third is connection. That is you showing your personal life. You are humanizing yourself so that more people trust you. You share your journey, lessons, your transformation, your mistakes, everything about you, right? That has to be there because people invest in people, not in services. After getting our teammates started, we use something called authority content and story, जहां हम उनको डेली बताते हैं that किस डे पे आपने क्या पोस्ट करना है, and everything is so unique and everything comes out of you, your style, which cannot be copied. Right, so authority content and authority stories मैंने बनाया ही इस हिसाब से कि every content piece made by every coach would be unique to them. अब ये कंटेंट पीसेस इनसे व्यूज लाइक्स इतने ज्यादा नहीं आते बट क्या आता है क्लाइंट्स इवेंचुअली बिकॉज every content piece moves them through a journey and generates what interest, right? Then at Team FBA what we do is we build a 10x authority conversion process. So basically, whenever someone messages you, how do you build authority? How do you not sound needy? And how do you convert your prospects in high paying clients? Right? इसके लिए एक और पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है योर ऑफर, राइट? ऑफर, कोचिंग ऑफर, हम कोचिंग ऑफर बिल्ड करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांड, डिपेंडिंग अपॉन योर नीश. अब ऑफर आपकी नीश के हिसाब से होना चाहिए, ये नहीं कि टीम वाई वी एस वाला ऑफर उठा के रख दिया, राइट? बिकॉज गाइज मैंने आपको बताया बिजनेस बिल्ड करना है, एवरीथिंग हैज टू बी इन सिंक विद यू, योर नीश एंड एवरीथिंग एल्स, राइट? नेक्स्ट कम्स एक बार जब बेसिक सिस्टम सेट हो गए, नाउ वी क्रिएट अ सिस्टम to generate leads on demand. In a way, these are unlimited people who would get generated, who would have some interest in what you are doing, right? But obviously, nurture karna padta hai. But we create set systems to get in literally unlimited leads in your system, and that's what. Next thing which we work on is systems to keep clients for longer, and because it's 10x easier to get renewals and keeping clients for longer, and literally 2x is the revenue every 3 months, right? 1.5x to 2x the revenue करनी है आपने every 3 months. Yes, नए clients लाने, but your main focus should be what? Keeping your clients for longer. तो हम service build करते हैं. अब guys, अब now you would be like renewals कैसे आते हैं? Wow, मुझे बताओ. When all of these things are in sync, along with your client journey, along with your coaching method, client journey, uh, and obviously your service. अब आपके क्लाइंट्स क्यों नहीं स्टे करते आपके पास? बिकॉज योर सर्विस सक्स. आपने कभी सर्विस बिल्ड ही नहीं करी, आपने सिर्फ काम किया अपनी नॉलेज पे, सर्टिफिकेशंस पे. आपने ये नहीं देखा दैट हाउ डू आई मेक श्योर दैट माय क्लाइंट्स आर गेटिंग माय सपोर्ट थ्रू आउट देयर जर्नी, बिकॉज इफ दे डोंट फॉलो द प्लान इज पॉइंटलेस. The worst plan is the plan which looks the best but is not being followed by the client, right? Also, we also create referral systems wherever applicable because referrals are literally a nurture hack. Literally, अगर आपने renewals भी 2x कर लिए और referrals भी 2x कर लिया, आपका business 4x तो यहाँ ही हो गया. और ये कोई मैंने आपको कोई मैजिकल चीज नहीं बताई, ये पूरी दुनिया को पता, बट पीपल डोंट वर्क ऑन दैट, राइट? So to make sure of that, we work on that as number one. We build a service, level up the service wherever required, right? जब ये सारे सिस्टम सेट हो गए, then we create systems to 2x everything, diversify lead generation sources, add in funnels and everything else. Uh, every 4 to 12 weeks through our high level mastermind, which is called Fitness Business Empire, and it starts with what? Building a coaching method based off what? Market sophistication. राइट, सो मास्टरमाइंड है. अब मास्टरमाइंड के अभी तक रिजल्ट्स बता देता हूं. 87% ऑफ आवर क्लाइंट्स 2x विद इन द फर्स्ट 4 weeks ऑफ स्टार्टिंग द मास्टरमाइंड. लिटरली 87%. मतलब बेसिकली हमने 4th दिसंबर को स्टार्ट किया था, 4th दिसंबर और 1st जनवरी के बीच में. सो दिस वाज अ वेरी कूल रिजल्ट. एंड 8% of them, 8% multiplied further in the next month, 4x to 8x or 2x.
एंड बाकी जिन्होंने नहीं किया है, two of them did not put in efforts. I think one of them did not put in efforts, and two of them were already at eight figures. दो दो उनमें से क्लाइंट्स है जो ऑलरेडी एट फिगर्स पे, अब एट फिगर बिजनेस है बेसिकली, उसको डबल करने के लिए टाइम लगता है, राइट? Although, obviously, the results have been exceptional here. Obviously, it's different based off the person. And एक और चीज बताऊं, फीमेल्स पे 100% सक्सेस रेट है. आई थिंक वी हैड 5 females. uh, Everyone 2x or 4x, at least 2, 4, 8, राइट? इनकी भी केस स्टडीज अब मैंने डालनी स्टार्ट कर दी हैं. सो 100% फॉर फीमेल्स इन एफपी. एनीवे, दिस इज नॉट अबाउट एफपी, दिस इज अबाउट यू. Back to this. uh, Also, guys, obviously, whenever I talk about this stuff, take it with a pinch of salt, because obviously every case is different. Some people take more time to grow and stuff like that. But I'm sharing because I'm proud of these results, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं expect किया था कि भाई 87% लोग double कर जाएंगे अपना business. So this is very cool. Next is okay. So next is a call to action for you. If you want to know more about FBA or FBE, FBE के slots full हैं वैसे, but you can drop in a message. FBA के बारे में if you want to know more, if you want to set up all of these systems, because अगर आप ये वाले system set नहीं करोगे, आपको mastermind में हम नहीं डाल सकते वैसे भी anyway, right? आपने ये सारे systems set करने हैं इससे पहले वाले. You want to grow your business in a principal way manner, the same way we have scaled over 350 plus fitness businesses. Then literally DM us the word scale on Instagram or fill the short form in the description section. Description में क्या होगा, छोटा सा form होगा, वो fill करो, and let's see if we are a good fit. If we are not a good fit, we'll say that okay, not the right time for us right now. As simple as that, right? And let's strategize your business growth. And we'll only onboard you if we feel you're a good fit. If you're not a good fit, what we'll do is redirect you to the YouTube channel. Right, and if you're not ready yet, abhi nahi hai aapke, it's not the right time for you to start and scale your fitness business, start, grow and scale and level up everything. Then check out our YouTube channel ki baki trainings, right? Every week I'm creating 1 to 2 trainings, detailed trainings like this, to help you grow and level up and to nurture you so that eventually you become our clients, or at least worst case scenario, we provide value to you and we change your life, and you give us a referral even if you don't become our client, right? So that is what it is. And if you want our help, just DM us or just fill the short form. If not, just check out other YouTube trainings and subscribe. सब्सक्राइब करो. एंड इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे डिटेल्ड फ्रेमवर्क्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे. दिस इज द यूजर नेम. Lot of detailed frameworks like this, at least 30-35 frameworks are detailed to help you grow your business. So check that out. And detailed case studies are यहाँ पे of our teammates who leveled up and scaled with us. And hope this helps. And thank you. And bye.